Hello, good morning students. Today we are going to start for the biology periods and our first topic or first chapter we are going to discuss, that is the reproduction in plants. Reproduction in plants, and the subtopic is, or we can say that basic concepts regarding this chapter we are going to discuss about is, yes, parts of flower. So students, reproduction in plants is of three types: vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. All the three subtopics are included in our syllabus, but we are going to start with, yes, sexual reproduction in plants. And for the purpose of discussion of sexual reproduction in plants, we have to first discuss with the parts of the flower. Unless and until we discuss or know about all the parts of the flower, we can't go further regarding this topic, sexual reproduction in plants. Why? Because yes, flower is the sex organ of the plants. Flower is the sex organ of the plants. Hence, we have to discuss in very much detail about each and every part of the flower, as well as yes, functions of each and every part of the flower they play. Now, yes, angiosperms, yes, are the flowering plants. Angiosperms and gymnosperms, they are the flowering plants, and cryptogams, they are the non-flowering plants, or you can say lower plants. What I said? Cryptogams are the non-flowering plants and phanerogams are the flowering plants. And under the category phanerogams, there are two subdivisions, yes, gymnosperms and angiosperms. But as far as our 12th standard or 11th standard syllabus is concerned, we have to discuss only about the, yes, reproduction in angiosperms. And while discussing the topic, we are going to start for the subtopic, yes, parts of flower. Now, about discussing the parts of flower, yes, here as written on the board, a typical flower shows how many main parts? 3 main parts. A typical flower, see, this is the typical flower, and this typical flower shows 3 main parts. Among them, first one is the pedicel. Pedicel, a stalk of flower. Then second one is the thalamus, which will be shown to you, yes, very soon, after dissecting the flower. So the stalk of the flower is the pedicel, and then the second part of the flower, main part of the flower, that is the thalamus, on which all the 4 floral parts are situated or present or yes, arranged. Then yes, the third and most important part regarding the sexual reproduction, that is the whorls of the flower, that is means parts of the flower. See, now a typical flower shows 3 parts, students. Yes, pedicel, I am going to show you with the help of diagram. Yes, there on the board. Yes, the stalk of the flower is called as the pedicel. Then the part of the flower on which all the 4 floral organs are situated is the thalamus. Then remaining floral whorls or actual parts of the flower, they are 4: calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx, corolla, androecium and gynoecium are the 4 main important parts of the flower. Now, firstly we are going to discuss in detail about the part so called as the pedicel. See here, I am going to show you 2 different flowers. One flower is of gold mohar and other flower is of datura. Both of these, they are having the, yes, their individual pedicel. Means both of these are the pedicellate flowers. Both of these are the pedicellate flowers. Now you can observe the difference between the length of these pedicels. One flower, gold mohar flower, is having comparatively longer pedicel, and datura flower is having comparatively shorter pedicel. Means we can say about the pedicel that the pedicel is cylindrical, no doubt. Pedicel is cylindrical and may vary in length. Are you observing the length of comparative lengths of the datura flower and gold mohar flower? Gold mohar flower is having comparatively more length and datura flower is having a short pedicel. So yes, pedicel, which is nothing but a stalk of the flower. Very simply, the stalk of the flower is called as pedicel. It is always cylindrical and may vary in length. Now, it is not necessary that each and every flower in nature will have the pedicel. There might be some flowers which will be shown to you tomorrow that they are without pedicel. And the flowers I have already shown to you with pedicel, gold mohar and datura, and yes, the flowers with pedicel are called as the
pedicellate flowers. Flowers with pedicel are called as the pedicellate flowers. For example, Goldmore I have shown to you. So flower with pedicel is pedicellate flower, and flower without pedicel is the sessile flower. Okay, flower with pedicel, yes, without pedicellate flower, and flower without pedicel is the sessile flower. You might observe many pedicellate flowers in nature, but somehow rarely, yes, about the sessile flowers. Sessile flowers, the number of sessile flowers is comparatively less than the number of pedicellate flowers. So, what two important things we discussed about the pedicel today? Pedicel is nothing but the stalk of the flower. Pedicel is nothing but the stalk of the flower. It is cylindrical and vary in length. Then, yes, flower with pedicel is called as the pedicellate flower, and flower without pedicel is called as the sessile flower. Example of sessile flower is tuberose, which is I am going to show you later. So, yes, flower with pedicel, pedicellate flower. Flower without pedicel is sessile flower. Example of pedicellate flower is gold moher and or datura, or you can say China rose, or you can say simply rose. But yes, a flower without pedicel, that is the sessile flower. Example of this sessile flower is tuberose, which will be shown to you tomorrow. Then yes, about the function of pedicel. Why nature wants pedicel there in the flower? So the function of pedicel is to raise the flower in the air for pollination. See, pollination is the very important process regarding the sexual reproduction in plants. You know very well. So for the successful pollination, flower must get exposed in the plant for the purpose of pollination to the insects or birds or any pollinating agents, and for that purpose, yes, it must be get raised. And to raise the flower in the air for pollination, that is the purpose or function of pedicel. Means, what is the function of pedicel? I am going to repeat. Yes, to raise the flower in the air for pollination. To raise the flower in the air for pollination. So, this is all regarding the pedicel. Now, we are going to discuss about the next part of the flower, and that is the pedicel. Now, what exactly is the pedicel? What exactly is the thalamus? Pedicel we already discussed. Now about the thalamus. So what exactly is the thalamus? The enlarged tip of the pedicel. See, observe here. I am going to focus the diagram. So here, this is the pedicel, the stalk of the flower. Wherever it ends towards the floral parts, at that end, it has been swollen. It has been swollen, and to increase its surface area so that all the parts may get arranged on it. So, yes, the enlarged tip means the thalamus actually is not a different part, but it is an enlarged part of the or enlarged tip of the pedicel. It is the modified tip of the pedicel, because if surface area of pedicel is short, then many sepals, petals, androecium and gynoecium might not be get arranged on it. So, for that purpose, the tip of the pedicel gets enlarged, and that enlarged tip of the pedicel is nothing but the thalamus. The enlarged tip of the pedicel is nothing but the thalamus. And what is the function of C? Now I am going to show you the thalamus. This is the thalamus. Pedicel, short pedicel is there, and short pedicel is there, and that this is the enlarged portion of the pedicel that you can call as thalamus. Now, what is the function of thalamus? What is the role of the thalamus in the construction of flower? So, very important role. Yes, thalamus is the seat provided by nature, yes, for all the four floral parts to get arranged on it. So, we can say about the function of thalamus that it bears all the four floral parts. Now, which are the four floral parts of the flower? Yes, calyx, corolla, androecium and gynoecium. I am going to show you later. So, yes, you got both the points now. Pedicel, a stalk of flower, and thalamus, enlarged tip of pedicel. Function of pedicel, it raises the flower in the air for pollination, and function of thalamus, it bears all the four floral parts. Then, about the main important third part of any flower, that is the whorls of floral whorls or whorls of the flower. Now, we can divide the whorls of the flower into two. Yes, non-essential whorls and essential whorls.
Non-essential whorls and essential whorls. Now, one can ask me that how any part in the flower or how any part constructed or kept there by nature in the flower be non-essential. Non-essential in the sense, yes, in the viewpoint of reproduction. Means the parts of the flower which are not involved in the process of sexual reproduction directly, they are described as non-essential parts. Better to say accessory parts or helping parts. Means what? Yes, the parts of the flower which are not directly involving in the process of sexual reproduction, but still they are helping in the process of reproduction. Hence we can call them as yes, accessory parts or yes, helping roles too. Now, which are the non-essential parts of the flower? Calyx and corolla. Now see, this green part of the floral bud is described as calyx, and this colorful yes, part of the flower is described as corolla. See, this green part of bud, the whole flower in bud condition is here covered by the green part, and that green part is nothing but the calyx. And here, yes, the colorful part here in case of gold mohair, and yes, a white portion in case of datura, they represent the corolla part. And here green parts in yes, gold mohair flower, see, green parts in gold mohair bud as well as green part in yes, datura bud. Both of these, they are representing the calyx, and the colorful or white part of the flower, yes, that is representing the corolla. Now, yes, two major non-essential parts of the yes, flower, they are calyx and corolla. Now, we are going to discuss about the members of calyx. Now see, members of calyx are the sepals. Now I am going to show you about the sepals only. Means I am going to remove all the remaining parts of floral parts of the flower. I am going to show you only sepals. Now see, students, these are the sepals. Or yes, in combined form I can show you. Yes, I am going to separate this bud and going to show you the part that is the yes, calyx or representing the sepals. See, I am going to remove all the remaining parts and just going to show you the calyx. See, all these green separated parts, they represent sepals. Means the members of calyx are sepals. See, the members of calyx are sepals, and yes, about the sepals we will discuss in detail later on. Yes, sepals might be free or fused, but we are going to discuss about that in our next period. Now, about the next part of the flower, that is the corolla. I have already shown this flower to you. These colorful parts, they are going to represent yes, corolla in combine, and the members of corolla, they are described as petals. See, either colorful or white. Petals may be either colorful, or in some cases it might be white, or in some cases it might be yes, with many colors too. So the colorful part of the flower is called as the colorful or white part of the flower, which is there for attracting the insects for pollination. That represents corolla, and the members of corolla are petals. Now see, in this gold mohair flower, how many petals are there? Let's count. 1, 2, 3, 4 and 5. 5 petals are there, and all these 5 petals are collectively representing yes, corolla. Now, members of calyx, sepals, and yes, members of corolla, petals. Sepals might be free or fused. Petals might also be free or fused. But for this different condition, different terminologies are there, and we are going to yes, discuss about those terminologies. Now I have shown you gold mohair bud. Where it is? Gold mohair bud. See, this is the gold mohair flower, and these separated parts, they represent the yes, calyx with free sepals. And the condition calyx, where calyx is showing the free sepals, is called as polysepalous. What to describe? How to describe? Yes, polysepalous means the members of calyx are sepals, and sepals when are free, then we are going to call the condition as
yes, polysepalous condition. Then, so in some flowers, in certain flowers, yes, the sepals might be fused, as in Datura. Yes, as in Datura here, yes, 5 sepals are there, but all of these they are fused to form a tube here. And if in any flower, yes, all the sepals they are fused to form a tube-like structure, then that condition is described as gamosepalous condition. Then that condition is described as gamosepalous condition. Means अगर flowers के जो members है वो members अगर free होते हैं sepals और petal दोनों, तो उनके लिए अलग-अलग conditions है. अगर sepals free है तो कहेंगे polysepalous, और अगर sepals fuse है तो कहेंगे yes gamosepalous. और अगर petals free है तो petals कौन से flower में free देखे हमने? गोल्ड मोहर का flower देखा हमने. गोल्ड मोहर के flower में petals free है. They are not joined, they are not going to form any kind of tube. So whenever petals are free, then we were discussing about the calyx and corolla. Their members we already discussed. Yes, the members of calyx are sepals. See, the members of calyx are sepals. Observe. So the members of calyx are sepals. These sepals are free in certain flowers, as in gold moher you are going to observe all the yes sepals are free, and if sepals are free then the condition is called as polysepalous. अगर sepals free है तो उसे हम बोल रहे हैं polysepalous. अब बात आ रही है petals की. अब अगर petals free है ना, sepals free है मैंने बताया. अब अगर petals free है, जैसे कि गोल्ड मोहर में पेटल्स फ्री है, तो अगर पेटल्स फ्री है तो पॉलीपेटलस. सी, अगर सेपल्स फ्री है तो पॉलीसेपेलस, और अगर पेटल्स फ्री है तो पॉलीपेटलस. नाउ रिगार्डिंग द गैमो कंडीशंस. गैमो कंडीशंस मींस वेयर द फ्लोरल पार्ट्स, मेंबर्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स दे आर फ्यूज्ड. नाउ इन केस ऑफ यस गोल्ड मोहर, in case of gold mohers, petals are free here. Hence the condition is yes polypetalous. And in case of datura, petals are fused here. Hence the condition is gamopetalous. Means in datura flower, see, I am going to show you the complete flower of datura. In datura flower, all the 5 petals they have been fused and to form a tube, and such condition is called as yes gamopetalous. Gamopetalous. And what about the gamosepalous condition then? Yes, here in case of datura flower, all the sepals means green part, outermost part of the flower is called as the calyx, and its members are sepals. Now all the 4 members of the or 5 members of the calyx, if they are fused to form a tube, then condition is called as gamosepalous. What is the condition? Gamosepalous. Now yes, हमने चारों कंडीशन देखे हैं. अब ये चारों कंडीशन मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ. सी, मेन roles of the flower, yes, we divide into 2, non-essential or accessory or helping roles and essential roles. Non-essential roles में हमने लिया कैलिक्स और करोला. कैलिक्स के मेंबर्स क्या होते हैं? सेपल्स. करोला के मेंबर्स क्या होते हैं? पेटल्स. कैलिक्स के मेंबर्स सेपल्स, करोला के मेंबर पेटल्स. ओके, देन yes, calyx members might be means sepals might be free or fused, as well as petals might also be free or fused, but different terms are there for these conditions. If sepals are free, then condition is called as polysepalous. If sepals are free, then polysepalous. If sepals are fused, then gamosepalous. If sepals are fused, then gamosepalous. Then about the petals now. If petals are free, then polypetalous. If petals are free, then polypetalous. And if petals are fused, then gamopetalous. If petals are fused, then gamopetalous. Now about the essential whorls, androecium and gynoecium. Androecium and gynoecium. Now, yes, I am going to show you androecium part of the flower only. See, observe. These are the stamens. Are you able to count? 1, 2, 3, 4 and 5. See, the members of the androecium, they are called as the stamens. Here in this datura flower, there are, yes, 5 stamens. How many? 5 stamens. And all the stamens are free. And all the stamens are free. Now, see, the members of androecium are stamens.
Stamens might also be free or fused, है ना, but that part we will discuss in next period. Now we are just going to introduce about the members of essential whorls today, and now about the members of gynoecium. Gynoecium, the members of gynoecium, carpel. See, here I am going to use only carpel part. This is the carpel part only. Now stamen, calyx, yes, see, are hidden, and in my fingers there is just the gynoecium, and the members of gynoecium are the carpels. But now in this datura flower there is just a single carpel, hence I am going to show you a single carpel. So the members of gynoecium are carpels. The members of gynoecium are carpels. Now about all the members once again: calyx the members sepals, corolla the members petals, androecium the members stamens, and gynoecium the members, yes, carpel. Okay, once again: calyx the members sepals, corolla the members petals, androecium the members stamens, and gynoecium the members, yes, carpel, or you can anotherly call it as pistil. Then sepals, petals, all these four members might either be fused or free. Now if the members of calyx means sepals are free, then the condition is polysepalous. For example, datura flower, gold mohr flower. And if the members are fused, then the condition is called as gamosepalous condition. Example, datura flower. Now when petals are free, the condition is called as polypetalous. For example, gold mohr flower. And if the petals are fused, then the condition is called as gamopetalous. Again, the example is datura. Now the members of androecium, stamen, and members of gynoecium, carpel or pistil. These members can also be free or fused, but about their terminologies we are going to discuss in next period. Students, अभी मैं आपको एक बार फिर से हिंदी में रिवाइज करके देती हूँ जो भी मैंने पढ़ाया आज. देखिए, हमने जो चैप्टर शुरू किया है, टॉपिक शुरू किया है, वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. उसमें सब टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. क्यों हम पार्ट्स ऑफ द फ्लावर सब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ने के पहले? क्योंकि फ्लावर जो होता है बच्चों, वो प्लांट का क्या होता है, सेक्स ऑर्गन होता है, और इस फ्लावर के बेसिस पे ही प्लांट अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट करता है. इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर हम पढ़ रहे हैं. तो हमने देखा कि टिपिकल स्ट्रक्चर जो होता है फ्लावर का, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. कौन से 3 पार्ट में डिवाइड किया है? पेडिसेल, थैलेमस और फ्लोरल व्हॉल्स. पेडिसेल, थैलेमस और फ्लोरल व्हॉल्स, ऐसे 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है. मैं पूरा हिंदी में समझाना चाहूंगी. ये जो पेडिसेल होता है ये सिलेंड्रिकल ही होता है हमेशा, है ना. बायोलॉजी में मोस्ट ऑफ द थिंग जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल या सर्कुलर ऐसे ही होते हैं, उनके ज्यादातर एजेस नहीं होते हैं. तो सिलेंड्रिकल, और उनकी लेंथ जो है फ्लावर टू फ्लावर क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है. यानी कुछ फ्लावर्स में एकदम छोटी, कुछ में मीडियम, तो कुछ में एकदम लंबा पेडिसेल भी हो सकता है. ये फ्लावर पे डिपेंड करता है बच्चों कि कौन सा फ्लावर है. नेचर उसे कितना ऊपर उठाना चाहता है, कितना रेज करना चाहता है. अलग अलग प्लांट के लीव्स की जो साइज होती है, ब्रांचेस का जो एक्सपांशन होता है वो अलग अलग होता है, और उसके हिसाब से नेचर जो है वो पेडिसेल की साइज डिसाइड करता है ना. परफेक्ट वो साइज रखता है. तो उसके बाद हमने देखा कि जरूरी नहीं है कि सभी फ्लावर्स का पेडिसेल हो. कुछ फ्लावर्स का पेडिसेल होता है, कुछ का नहीं होता है. तो जिन फ्लावर्स का पेडिसेल होता है, यानी कि स्टॉक होता है, देखो पेडिसेल यानी क्या है, फ्लावर का स्टॉक है. तो जिन फ्लावर्स का पेडिसेल होता है उन्हें हम पेडिसिलेट फ्लावर बोलेंगे. ओके, जिनका स्टॉक होता है, जिनका पेडिसेल होता है, उन्हें हम पेडिसिलेट फ्लावर बोलेंगे, और जिनका नहीं होता है उन्हें हम सेसाइल फ्लावर बोलेंगे, है ना. फ्लावर विथ पेडिसेल, पेडिसिलेट, विदाउट पेडिसेल, सेसाइल. उसके बाद हमने देखा कि फंक्शन क्या है भाई पेडिसेल का फ्लावर में, है ना. क्यों रखा है पेडिसेल पार्ट फ्लावर में? तो वो इसलिए रखा है क्योंकि ये पेडिसेल जो है वो फ्लावर को ऊपर उठाता है ना, एक्सपोज करता है लीव्स के बाहर, ताकि इंसेक्ट्स को फ्लावर जो है वो दूर से दिख सके. क्यों? क्योंकि इंसेक्ट जो होते हैं वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, उन्हें फ्लावर दिखेंगे तो वो उस प्लांट को विजिट करेंगे पॉलिनेशन के लिए. इसलिए कीड़ों को, बर्ड्स को दूर से फ्लावर का दिखना जरूरी है, और इसके लिए फ्लावर में पेडिसेल पार्ट का होना जरूरी है. उसके बाद यस, थैलेमस दूसरा पार्ट है. मैंने थैलेमस भी आपको दिखाया. तो थैलेमस कोई अलग पार्ट वैसे तो है नहीं, क्योंकि थैलेमस जो होता है ये पेडिसेल का ही एक्सपांशन होता है, पेडिसेल का ही एक्सटेंशन होता है.
ना। तो ये पेडिसेल है, और पेडिसेल जब आखिरी में टिप उसका जब सोलन होता है, थोड़ा सा एक्सपांड हो जाता है अपना सरफेस एरिया बढ़ाने के हिसाब से, तो उसी को हम कहते हैं थैलामस। मीन्स थैलामस इज द एक्सटेंडेड और एक्सपांडेड, यू कैन बेटरली से, so expanded part of the pedicel on which all the four floral whorls might get arranged। ऐसा पार्ट पेडिसेल को थोड़ा एक्सपांड किया नेचर ने। क्यों एक्सपांड किया बच्चों? क्योंकि उसके ऊपर चारों पार्ट अरेंज होने चाहिए। अगर पेडिसेल का सरफेस एरिया कम रहा और हमें अगर बंची फ्लावर्स बनाने हैं, तो फिर ऐसे में इतने सारे मेंबर्स, यानी 5-50 पेटल, 5 एक कैलिक्स के सेपल्स, और कुछ 5 कम से कम एंड्रोशियम, एक आधा गाइनोशियम का पार्ट, तो इतने सब मेंबर्स छोटे से सरफेस एरिया में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए नेचर पेडिसेल को एक्सपांड करता है। और कितना एक्सपांड करता है? जितनी उसे ओवरऑल फ्लावर की साइज रखनी है, उस हिसाब से वो क्या करता है पेडिसेल को। जैसे कि कमल का फूल है, तो कमल के फूल में इतने से एक्सपांशन से नहीं होगा, क्योंकि पेटल्स की संख्या भी ज्यादा होती है और आकार भी बड़ा होता है। इसलिए बहुत ज्यादा एक्सपांशन करना पड़ेगा थैलामस का नेचर को कमल का फ्लावर बनाते हुए, लोटस फ्लावर बनाते हुए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि थैलामस ये जो है ये पेडिसेल का एक्सपांडेड पार्ट है, एक्सपांडेड पोर्शन है, और उसके ऊपर फ्लावर के चारों पार्ट यानी कि कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, चारों पार्ट नेचर अरेंज करता है। उसके बाद हमने देखा फ्लोरल व्हॉर्ल्स दो प्रकारों में डिवाइड किए, नॉन इसेंशियल और इसेंशियल। नॉन इसेंशियल और एसेसरी और हेल्पिंग व्हॉर्ल्स हम उन्हें कह रहे हैं जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल नहीं है। लेकिन ये नहीं कि उनका रोल ही नहीं है, उनका रोल है, वो हेल्प करते हैं प्रोसेस में। कैसे हेल्प करते हैं हम कल देखेंगे। तो वो हेल्प करते हैं, एसेसरीली रोल रखते हैं अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, लेकिन उन्हें नॉन इसेंशियल कहने से ज्यादा अच्छा है कि उन्हें हम एसेसरी और हेल्पिंग रोल्स कहें। ठीक है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स भले ही हमारे पढ़ाई में है ना डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उनका इनडायरेक्ट रोल हमारी पढ़ाई में जरूर होता है। वैसे ही यहाँ हेल्पिंग रोल्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में भले ही डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होते हो, लेकिन उनका इनडायरेक्ट रोल, हेल्पिंग रोल जरूर है। कैसा है वो हम कल देखेंगे। उसके बाद इसेंशियल रोल्स किन्हें कहा गया है? जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है किस प्रोसेस में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में प्लांट के। तो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम इसेंशियल रोल्स कहते हैं। अब नॉन इसेंशियल रोल्स कौन से हैं और इसेंशियल रोल्स कौन से हैं? तो कैलिक्स और करोला, ये दो जो है ये नॉन इसेंशियल रोल्स है, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये दो जो है वो इसेंशियल यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन्स है प्लांट के। ना कैलिक्स के मेंबर्स हमने देखे सेपल्स, करोला के मेंबर्स पेटल्स, एंड्रोशियम के मेंबर स्टेमन्स और गाइनोशियम के मेंबर कार्पेल। तो कल के लिए आपको कौन सा पार्ट पढ़ के रखना है? कल मैं क्या पूछूंगी आपसे? कल मैं पूछूंगी सभी जो पार्ट्स है फ्लावर के उनके मेंबर्स पूछूंगी मैं आपको। सो क्या बताना होगा? कैलिक्स के मेंबर्स सेपल, करोला के पेटल, एंड्रोशियम के स्टेमन और गाइनोशियम के कार्पेल और पिस्टिल। उसके बाद मैंने पढ़ाया कि सेपल्स या पेटल्स जो होते हैं वो फ्री भी हो सकते हैं, कुछ फूलों में फ्यूज भी हो सकते हैं। अगर सेपल्स फ्री है तो उसे हमने नाम दिया है उस टर्म को पॉलीसेपेलस, और अगर सेपल्स फ्यूज है तो हमने कहा है गैमोसेपेलस। अगर पेटल्स फ्री है तो हमने कहा है पॉलीपेटलस, और अगर पेटल्स फ्यूज है तो हमने कहा है गैमोपेटलस। अब ऐसा एंड्रोशियम और गाइनोशियम के कंसर्न में भी है ना, कि एंड्रोशियम के मेंबर्स जो है स्टेमन है वो भी फ्री या फ्यूज हो सकते हैं, गाइनोशियम के मेंबर्स जो है कार्पेल वो भी फ्री या फ्यूज हो सकते हैं। उनके लिए भी अलग अलग टर्म है जो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, वो जो हमारा कल का टॉपिक है। लेकिन मैं एक इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि अगर स्टेमन्स फ्री है तो पॉलीएंड्रस, अगर स्टेमन्स फ्यूज है तो सिनाइंड्रस, अगर कार्पेल्स फ्री है तो एपोकार्पस, और अगर कार्पेल्स फ्यूज है तो सिनकार्पस। लेकिन ये 4 टर्म हम कल पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। आपको जो पीडीएफ फॉर्म में या फाइल में डायरेक्ट जेरोक्सेस दिए गए हैं उनका फर्स्ट और सेकंड पेज, फर्स्ट पेज या थोड़ा पार्ट सेकंड पेज का पढ़ के रेडी रखिए। कल मैं पूछूंगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम के डिटेल पार्ट्स के साथ, उनके डिटेल फंक्शंस के साथ, और कुछ जो आज के टर्म रह गए हैं बताना, एक्सप्लेन करना, वो भी हम कल के पीरियड में। अब टिल देन हैव अ नाइस डे।